Royal Enfield motorcycles have been modified and digitally rendered in many forms and their basic structure even supports all kinds of modifications. कभी किसी ने सोचा है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन क्यों इतना पॉपुलर है? सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी चर्चे हैं इस ब्रांड के। पिछले कुछ सालों से हमने ऐसे कई सारे डिजाइन देखी है जो चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन लेवल तक लेके जा सकते हैं। Images of one such design have come across in the form of Enduro 650, which seems to be based on Royal Enfield Interceptor 650. While previous design renderings based on Scrambler 650 have trended on the internet on multiple occasions, the user in this case claims that it is purely an endurance bike. एक Scrambler और एक traditional Enduro के बीच में अंतर करना मुश्किल हो सकता है, but the latter looks inclined to travel on broken or no tarmac, whereas the former looks more content to take the streets. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज वॉच टिल द एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब इस बीस्ट के डिज़ाइन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके जो पीछे के टायर हैं वो आगे के टायर से थिकर हैं, जस्ट एज टिपिकल एंड्यूरो बाइक्स। द व्हील्स however are 21 inch size for front and 17 inch at rear. The Enduro 650 is equipped with spoke wheels, but anything other than that would surely look like a misfit in an Enduro. Signature Enduro elements such as minimum body panels, upright stands and high ground clearance are common to these images. The bikes also get high mounted fenders on front and rear, thus leaving a huge gap between them and wheels. Rest of the bikes gets same retro classic touch with round headlamps and taillights, a flat seat and tall handlebar. I would say that this bike will run on limited electronic gimmicks and technical gadgets, and it will be more about the mechanical character which adds to the riding pleasure.